Assalamu alaikum. Actually, we were doing the topic matrices, and yesterday we discussed some basics of matrices. I mean, what is a row? What is a order of a matrix? Order of a matrix is basically number of rows into number of columns. What are rows? Rows are the horizontal lines. Columns are the vertical lines. And if you write rows into columns, that is the order of a matrix. What is a square matrix? In which number of rows and number of columns are equal. Rectangular matrix, number of rows and number of columns are not equal. If all the entries are 0 in a square matrix, then that is called a null matrix. Identity matrix is 1001, 100, 010, 010, mean if diagonal elements are 1 and all other elements are 0, that is identity matrix. Then we did addition and subtraction. If you want to do the addition or subtraction of two matrices, then the condition is that both matrices should have the same order. And if they have the same order, then just add or subtract the corresponding elements. Multiplication with a scalar number. So if you want to multiply 3 with a matrix, so multiply 3 with all the entries. Okay, today we will do the multiplication of matrices. Just like addition and subtraction, I mean addition and subtraction has some condition for the addition and subtraction to be possible. And what was the condition? The condition was कि order should be same. अगर two matrices का order same नहीं है तो आप उनको add या subtract नहीं कर सकते. इसी तरह multiplication के लिए भी एक condition है कि multiplication कब possible होती है. वो condition क्या है? The condition is कि if you are multiplying two matrices A and B, then number of columns of first matrix should be equal to number of rows of second matrix. मीन अगर टू मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है तो फर्स्ट मैट्रिक्स का ऑर्डर फर्स्ट मैट्रिक्स की नंबर ऑफ कॉलम्स और सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज शुड बी इक्वल. मीन अगर एक मैट्रिक्स ए है, इसको आप मल्टीप्लाई करना चाहते हैं विद मैट्रिक्स बी, और अगर ए का ऑर्डर है P by Q. P by Q mean number of rows are P and number of columns are Q. और अगर Q का ऑर्डर है, सॉरी मैट्रिक्स B का ऑर्डर है Q by R, then here multiplication is possible क्योंकि फर्स्ट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स क्या हैं? Q. फर्स्ट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स Q हैं और सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज Q हैं. सो फर्स्ट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स और सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज, दे आर इक्वल, and if they are equal, it means the multiplication is possible.
सो ये दोनों इक्वल होने चाहिए. अगर ये दोनों इक्वल होंगे तो मल्टीप्लिकेशन इज पॉसिबल. सो फर्स्ट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स, सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज. यहाँ पे देखें क्यू और क्यू है, तो इसका मतलब ये दोनों इक्वल हैं. सो इसका मतलब इनकी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है. और अगर हम इनको आगे भी हम फर्दर इनकी बात करेंगे, बट कुछ एग्जांपल देखते हैं. आपने सिर्फ ये चेक करके मुझे बताना है कि मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है या नहीं. फर्स्ट वन, if I say the two matrices are, one matrix is 1, 2, 3, 4, and the other matrix is 5, 6. जी, इसमें बताइए मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है या नहीं. यस जोया, क्या मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है यहाँ पे? Yes, sir. ओके. सो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, चेक करते हैं. जोया ने कहा है कि पॉसिबल है. फर्स्ट मैट्रिक्स की रोज 2 हैं और कॉलम भी 2 हैं, सो इसका ऑर्डर 2 by 2 है. जो सेकंड मैट्रिक्स है उसकी 2 रोज हैं और 1 कॉलम है, मीन उसका ऑर्डर 2 by 1 है. सो आप देखिए फर्स्ट के नंबर ऑफ कॉलम्स और सेकंड के नंबर ऑफ रोज आर इक्वल, सो 2 and 2. सो इट मींस मल्टीप्लिकेशन इज पॉसिबल. So the multiplication of this is possible. Second, if you have 3, 4 with 5, 7, 9, 1. जी इकरा बताइए क्या इसकी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है? नो. ओके राइट. देखिए फर्स्ट मैट्रिक्स का ऑर्डर है 2 rows and 1 column और सेकंड मैट्रिक्स का ऑर्डर है 2 by 2. So first के number of columns और second के number of rows are not equal. So you are right, multiplication is not possible. Okay, third. Third, if you have 1, 2, 3, 4, 5, 6, and then we have 2, 8, 1, 7. If you see here, the order of first matrix is 2 by 3, mean 2 rows, 3 column. Order of second matrix is 2 rows and 2 columns. If we see, the first matrix has 3 columns and second matrix has 2 rows. So they are not equal. So it means the multiplication is not possible. More examples. If we have 3, 7 times 2, 5. जी जोया प्लीज टेल, क्या मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है? Yes. Yes. Let's see. The order of first matrix is 2 rows
and one column. The order of a second matrix is one row, two column. So columns of first matrix and rows of second matrix, they are equal, 1 and 1. So it means the multiplication is possible. Fifth, 3, 7, 2, 5. G, Ikra, multiplication possible? Is it possible to multiply these two matrices? Yes or no? Yes. So the order of first matrix is one row and two columns. So 1 by 2. Order of second matrix is two rows and one column. Two rows and one column mean 2 by 1. So number of columns of first matrix, number of rows of second matrix, they are equal. So it means the multiplication is possible. One more example. One, two, three, 4 times 5, 6, 7, 8, 9, 0. Is the multiplication possible? Yes. The order of first matrix 2 by 2. Order of second matrix. So number of columns of first matrix and number of rows of second matrix, they are equal. So it means the multiplication is possible. So I hope with these examples, now you can check whether the multiplication is possible or not. Now the next step is we want to see how to multiply. If the multiplication is possible, then how will you multiply two matrices? Okay, let's start with an example. Okay, if you have a matrix, general matrix A, B, C, D, and you want to multiply this matrix with, suppose, P, Q, R, S, T, U. I'm just taking first example as a general example. First, check whether the multiplication is possible. First, the order of this matrix is 2 by 2. The order of this matrix is 2 by 3. So the number of columns of first matrix and the number of rows of second matrix, they are equal. So it means the multiplication is possible. Now, how to multiply these two matrices? So the multiplication of matrices is quite different than addition and subtraction. In addition and subtraction, it was quite easy to just add or subtract the corresponding elements. But here, this is not the case. In multiplication, we have to multiply rows with columns. We will multiply rows with columns. Mean the first matrix की rows को second matrix की column से multiply करना है. Mean first matrix की row है this one, AB. It will get multiplication with the columns, this one.
तो पहले आप क्या करेंगे, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, देन रो 1 with column 2, then row 1 with column 3. Mean, I'm repeating, first the multiplication of row 1 with column 1, gap, row 1 with column 2, gap, row 1 with column 3. ये row 1 की multiplication complete होगी. Then you will multiply row 2 with column 1, row 2 with column 2, row 2 with column 3. मीन, मैं इसका अब जनरल एक पहले रूल लिखता हूं, फिर हम एक्चुअली करेंगे मल्टीप्लाई. मीन फर्स्ट आई वांट टू मल्टीप्लाई रो 1 विद कॉलम 1. सो रो 1 विद कॉलम 1, देन गेट रो 1 विद कॉलम 2, then row gap row 1 column 3. So this is the multiplication of row 1 with each column 1, 2 and 3. अब नीचे हम क्या लिखेंगे, multiplication of row 1 row 2 now. Multiplication of row 2 with first column, row 2 with second column, row 2 with third column. Okay, let's do the multiplication. अब रो 1 with column 1, अब रो 1 column 1 के साथ कैसे मल्टीप्लाई होगी? How to multiply row 1 with column 1? रो 1 column 1 से ऐसे मल्टीप्लाई होगा कि A will get multiplication with P and B will get multiplication with S, और दोनों आपस में ऐड होंगे. A with P mean A times P is AP plus B with S. So this is the multiplication of row 1 with column 1. A with P and B with S, और दोनों ऐड होंगे. This is the multiplication of row 1 with column 1. अब गैप दीजिए, row 1 with column 2. Row 1 with column 2 mean row 1 column 2 के साथ कैसे, A with Q and B with T. A times Q plus B with T. Then the multiplication of row 1 with column 3. Row 1 column 3 mean A R के साथ और B U के साथ. A times R A R plus B times U is B U. Now the multiplication of second row. Second row with first column. वो कैसे? C D with P S means C with P and D with S. So CP plus DS. Second row, second column. CD with QT. C with Q, CQ plus D with T, DT. And finally, second row, third column. C with R and D with U. CR plus DU. ओके, अब हम कुछ नंबर्स लेके इस एग्जांपल को, क्वेश्चन को समझते हैं. If you have a matrix 3, 1, 4, 2, you want to multiply this matrix with, suppose, 6, 0, 9, 8, 7, 4. We already checked it's the same matrix 2 by 2 and then 2 by 3 order. आप इसका first के number of columns और second के number of rows equal है, so multiplication possible है. So अब multiply करते हैं हम इसको. अब multiplication कैसे होगी? First row with first column.
मीन 3 1 with 6 8. 3 1 with 6 8 कैसे मल्टीप्लाई होगा? 3 6 के साथ और 1 8 के साथ. 3 6 के साथ 3 times 6 18 plus 1 with 8 mean 8. ये फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई कर दिया. नाउ फर्स्ट रो with second column. 3 times 0 with 1 times 7. So 3 into 0 is 0 plus 1 into 7 is 7. 3 1 with 9 4. Row 1 with column 3. So 3 with 9 and 1 with 4. 3 times 9 27 plus 1 times 4 is 4. ये हमने रो 1 को कॉलम 1 कॉलम 2 और कॉलम 3 तीनों से मल्टीप्लाई कर दिया. ओके, नाउ रो 2 with column 1 पहले, फिर column 2, फिर column 3. Okay, row 1 with column 1 mean 4 with 6 24 plus 2 with 8 16. Sorry, row 2 with column 1. Ab row 2 with column 2. Row 2 with column 2. 4 times 0 is 0. 7 2 times 7 is 14. Then row 2 with column 3. 4 times 9 36. 2 times 4 8. So the final answer is 18 plus 8, which is 26. 0 plus 7, 7. 27 plus 4, 31. 24 plus 16, 40. 14. 36 plus 8 is 44. जी क्लियर है सबको? Okay, now I'm giving you one question. आप वो attempt कीजिए. We have a matrix 2 3 4 7. Multiply this matrix with 8 6 1 9. G start. कि मल्टीप्लिकेशन आपने देखा होगा, इसका ऑर्डर भी 2 by 2 है, इसका ऑर्डर भी 2 by 2 है. सेकंड फर्स्ट के कॉलम और सेकंड के रोज दे आर इक्वल, सो इट मींस द मल्टीप्लिकेशन इज पॉसिबल. सो अब आप मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट रो विद फर्स्ट कॉलम. Multiplication of first row with first column mean 2 with 8 16 plus 3 4 with a 6 is 24. This is row 1 with column 1. फिर रो 1 को कॉलम 2 से मल्टीप्लाई कीजिए. 2 को 1 से, 4 को 9 से. Then row 2 with column 1 with it, which is 3 times 8 24 plus 7 times 6 42. And then row 2 with column 2. 3 with 1 and 7 times 9 63. And now you will get 16 plus 24 is 40
2 plus 36 is 38. 24 plus 42 is 66. 3 plus 63 is 66. So this is the multiplication. Okay, one more thing. We know that if you multiply two matrices, if you want to multiply those two matrices, first you need to check कि multiplication possible है या नहीं. Like here we know the rule कि अगर A को B से multiply करना है matrices A B को, तो A के number of columns और B के number of rows equal होंगे. और अगर ये इक्वल हैं तो इनको मल्टीप्लाई करने के बाद जो एक नया मैट्रिक्स आएगा, सो ए टाइम्स बी, अगर इसको मल्टीप्लाई करने के बाद जो नया मैट्रिक्स आ रहा है, सपोज दैट मैट्रिक्स इज सी, सो जो फाइनल मैट्रिक्स आएगा उस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा. जब आप टू मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कर लेंगे, जो फाइनल मैट्रिक्स आएगा उस मैट्रिक्स का ऑर्डर हमेशा ये होगा. P times R. ये जो P times R है, this matrix, number of rows of first matrix and number of columns of second matrix P and R. अगर two matrices की multiplication possible हुई तो उनका order होगा उसके final product का, मीन final जो answer आएगा उसका order होगा P by R. क्या ये बात इकरा को समझ आई है? सो अगर आपको टू मैट्रिसेस आ जाते हैं जिनकी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है और आपको मल्टीप्लाई करने के लिए कहता है, तो आप सिंपली लिखते हैं मल्टीप्लिकेशन इज नॉट पॉसिबल, दैट्स इट. ओके जी. अब आप ये चेक कर सकते हैं जो थोड़ी देर पहले मैंने बात की. आप ये देखें कि यहाँ पे हमारे पास टू मैट्रिसेस थे. इसका ऑर्डर था 2 by 2, इसका ऑर्डर था 2 by 3. इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन बता रहा था, ये बता रहा था कि मल्टीप्लिकेट द ऑर्डर. इससे ये पता चल रहा था कि फाइनल मैट्रिक्स विल हैव द ऑर्डर 2 by 3. आप देखिए फाइनल जो आंसर आ रहा है उसका ऑर्डर 2 by 3 है. 2 rows 3 columns. ओके, ये चलें एग्जांपल आगे लेते हैं. इफ वी हैव अ मैट्रिक्स 3 - 2 -6, जी बताइए मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है कि नहीं? इसका ऑर्डर 2 by 2 है. सेकंड मैट्रिक्स का ऑर्डर 2 by 1 है. सो दिस इज टेलिंग कि मल्टीप्लिकेशन इज पॉसिबल. दिस इज टेलिंग कि मल्टीप्लिकेशन इज पॉसिबल. और ये आपको ये बता रहा है कि फाइनल
प्रोडक्ट विल हैव द ऑर्डर 2 by 1, जो फाइनल मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर 2 by 1 होगा। लेट्स सी, मल्टीप्लाई करते हैं। सो फर्स्ट रो विद फर्स्ट कॉलम, हमने फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। सो अगर हम मल्टीप्लाई करें, 3 5 से मल्टीप्लाई होगा 15, -2 विद -6 इज +12। सो ये हमने फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई कर दिया। अब होना तो ये चाहिए कि ये फर्स्ट रो सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई हो, बट देयर इज नो सेकंड कॉलम। इसका मतलब फर्स्ट रो की मल्टीप्लिकेशन कंप्लीट हो चुकी है। नीचे आ जाइए, अब हमने मल्टीप्लाई करना है सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से। सो सेकंड रो विद फर्स्ट कॉलम मीन 4 with 5 which is 20 and 7 with -6 -42. So 15 plus 12 is 27. 20 minus 42 is -22. सो आपके पास, अब आप फाइनल मैट्रिक्स देखिए, उसका ऑर्डर क्या है, 2 rows and 1 column, 2 rows and 1 column. Next, if you have 5 6 3 1, जी मल्टीप्लाई कीजिए जरा इनको। मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, अगर आपको लगता है तो मल्टीप्लाई करें इसको। जी डन। व्हाट्स आंसर जोया? 21. ओनली 21। इकरा योर्स? ओके। सो आप देखिए कि फर्स्ट जो मैट्रिक्स था उसका ऑर्डर था 1 row and 2 columns, और जो सेकंड मैट्रिक्स था उसका ऑर्डर था 2 rows and 1 column। इट मींस मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। और आपको ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि फाइनल मैट्रिक्स का ऑर्डर 1 by 1 होगा, मीन 1 row और 1 column होगा। तो इससे पहले ही आपको आइडिया हो गया कि ऑर्डर 1 by 1 होगा। सो अब आप क्या करेंगे, आपने मल्टीप्लिकेशन करनी है तो कीजिए, रो 1 विल गेट मल्टीप्लिकेशन विद कॉलम 1। सो रो 1 को जब कॉलम 1 से मल्टीप्लाई करें, मीन 5 को 3 से 15 प्लस 6 को 1 से 6, ये हम रो 1 को कॉलम 1 से मल्टीप्लाई कर चुके हैं। अब होना चाहिए रो 1 को कॉलम 2 से मल्टीप्लाई करें, बट देयर इज नो कॉलम 2। और फिर ये होना चाहिए कि रो 2 को फर्दर कॉलम 1 से करें, रो 2 भी नहीं है। सो दैट्स इट। सो 15 प्लस 6 21। आप चेक कीजिए, फाइनल आंसर का ऑर्डर इज 1 by 1, 1 row 1 column। सो मल्टीप्लिकेशन करने से पहले ही आपको पता था कि इसका ऑर्डर 1 by 1 होगा। ओके, अब ये देखिए,
multiply 3 4 with 5 6. If you think a multiplication is possible, then multiply these two. First, if you want to check whether the multiplication is possible or not, first matrix का order है 2 by 1. 2 rows, 1 column. Second matrix का order है 1 row, 2 columns. This shows कि multiplication is possible. और ये आपको बता रहा है कि फाइनल मैट्रिक्स का प्रोडक्ट जो आएगा, फाइनल मैट्रिक्स, उसका ऑर्डर होगा 2 by 2. उसमें 2 रोज और 2 कॉलम्स होंगे. इससे तो ये पता चल रहा है कि उसके 2 रोज और 2 कॉलम्स होंगे. लेट्स सी, मल्टीप्लाई करते हैं. फर्स्ट रो विद फर्स्ट कॉलम. जब हम फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करने लगे तो दोनों में एक एक ही एलिमेंट है. सो इसका मतलब 3 को जस्ट 5 से मल्टीप्लाई करना है और फर्स्ट रो के फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लिकेशन कंप्लीट हो जाएगी. सो 3 times 5 is 15. अब हमने फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करना है. फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करना मीन 3 into 6. So 3 into 6 is 18. That's it. So ये फर्स्ट रो की मल्टीप्लिकेशन कॉलम 1 और कॉलम 2 से होगी कंप्लीट. नाउ second row with first column. So second row with first column mean 4 with 5 only, which is 20. And second row with second column, 4 with 6. 4 times 6 is 24. So C, final answer ka order is 2 by 2. G, is that clear? सो ये थी कुछ बेसिक रूल्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन और हमने कुछ एग्जांपल्स किए कि मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल कब है और पॉसिबल हो तो फाइनल आंसर क्या होगा, और उनको मल्टीप्लाई करके देखा कि कैसे मल्टीप्लिकेशन होती है. हम इसी को फर्दर इंशाल्लाह एक्सटेंड करेंगे. आप कुछ मल्टीप्लिकेशन की प्रैक्टिस खुद कीजिएगा. थैंक यू सो मच. अल्लाह हाफिज.